Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th subject history, and we are in theme 9th, that is the Kings and Chronicles. And today we will discuss its 6th or 7th subheading, that is the Mughal court. Yesterday we have discussed the Mughal capitals and the court, but the capitals we have discussed, and today we will discuss the Mughal court. Mughal court is a separate subheading, very much important, as the Mughal courts played an important role during the Mughal period. Mughal emperors gave special attention towards the discipline in their courts and framed specific laws for activity. Nobody could dare to violate these norms or these laws. First of all, we will take the status in court. First point, that is status in courts. The status of a person in the court was determined on the basis of proximity, closeness, or the distance from the king or the from throne. यानी ये उस शख्स की हसीयत, उस शख्स की जो शख्स का जो स्टेटस था, that indicates the closeness to the king or the throne or the seat of the king. बादशाह के नज़दीक किस चेयर पे था वो कोर्ट में. It indicates the status of the person or status of the courtier. All the courtiers sat at the fixed places. No one could leave the court without permission of the king. If anyone violates the norms, he was immediately punished. This was the status of the court. यानी कोर्ट में किसका क्या स्टेटस था, किसकी क्या पोजीशन थी, किसकी क्या हैसियत थी. Second, we have the in court status was determined by special proximity to the king. The place according to a courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of emperor. यानी जिसकी जितनी हैसियत थी वो बादशाह के नज़दीक था, तो it indicates the position or the status of the courtier of the person. Second, we have the salutation. The forms of salutation to the ruler indicated the person's status in the hierarchy. Besides, there were explicit protocols that governed diplomatic envoys at the Mughal court. The second is the forms of salutation. The procedure of salutation was also fixed in the Mughal court. The forms of salutation to the king indicated the status of the courtier in the hierarchy. Sajda was the highest form of submission, that means the complete prostration. Two new forms of salutation were adopted during the rule of or the period of Shah Jahan. Those salutations were known as Chahr Taslim and the Zameen Bos. First was the Chahr Taslim and the second was Zameen Bos. What does these Chahr Taslim and Zameen Bos indicate? Those salutations were replaced. जो अकबर के ज़माने से जहांगीर के ज़माने में था, वो उनको शाहजहां ने रिप्लेस किया with the Chahr Taslim and Zameen Bos. Those salutations, there was Chahr Taslim and Zameen Bos was the kissing the ground was replaced the old salutations by शाहजहां. यानी वो ज़मीन को चूमना, ज़मीन पे सजदा करना, ये इसने रिप्लेस किया था with that of the Akbar's salutation. इन इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए
In 1608, James I, the King of England, had sent an envoy to the Mughal Emperor Jahangir. Thomas Roy was his name. James I ने अपना एक जो James I जो था, he was the King of England. He had sent his envoy Thomas Roy to the court of Jahangir. He just bowed before the Jahangir as per the European norms or European customs. But while after his salutation, he was expecting a chair in the court, but there was no chair for him, as there was the fixed chairs for the persons as per the status, as per the salutation or as per the status of the courtiers. और लिहाजा उसको he had to face humility, and that was shocked to everyone in the court. यानी उसने अपने यूरोपियन नॉर्म्स के मुताबिक अपना वो उसने सैल्यूटेशन पेश किया था. उसने वो जो एज पर द यूरोपियन नॉर्म्स he bowed before the King Jahangir, and he expected the chair, but there was no chair for him, and it was shocked not for the Thomas Roy but also the courtiers as well. Then we have the next, after salutation we have a special occasion such as the anniversary जो जरो का दर्शन जो था, जरो का दर्शन, that is the third point in this Mughal courts. Jaro ka darshan means, what does the Jaro ka darshan mean? The emperor began his day at sunrise with personal religious devotions or the prayers, and then appeared on a small balcony, the Jaroka, facing the east. यानी बादशाह अपने सुबह अपनी प्रेयर्स के बाद, अपने रिलीजियस प्रेयर्स के बाद एक बालकनी पे जाकर ईस्ट की तरफ अपने फेस को किए हुए ये हाईएस्ट सीट पे बैठकर एक्सपेक्ट करता था. एंड below the king a crowd of people, especially soldiers, merchants, craftsmen, peasants, women, and the other people waited for the darshan. Yani, king was facing the east in a balcony, the highest seat, and after that there were a number of people below him, the crowd, especially the persons, the soldiers, the merchants, the craftsmen, the peasants, the women with sick children waited for the darshan. The emperor, darshan of the emperor. This Jaroka darshan was introduced by Akbar with objective of a popular faith. It continued till Shah Jahan. शाह जहां के ज़माने तक ये सिलसिला जरोका दर्शन it continued, and in 1669 Aurangzeb had stopped this practice of Jaroka darshan. It was the period of Aurangzeb. He stopped this practice of Jaroka darshan के बादशाह एक बालकनी पे मशरिक की ओर चेहरा करके मशरिक की ओर बैठकर वो वेट करे, वो इंतज़ार करे कि लोग उसका दर्शन के लिए आए. और तमाम लोग, स्पेशली द ऑफिशियल्स, they were eager to see the face of or see the king, और उसका बादशाह का दर्शन करेंगे. That means that was the Jaroka darshan. There was a particular window in every palace for Jaroka darshan. Beneath it there was a vast compound where the people belonging to different classes flocked together for view. यानी हर एक जो पैलेस था, हर एक पैलेस में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बादशाह कभी कभार जब भी वहाँ जाए तो वहाँ पर उसके लिए एक जगह होती थी, और उसके सामने एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता था
जहाँ पर आम लोगों के लिए जगह थी जो बादशाह का दर्शन के लिए वहाँ इंतज़ार करते थे। देन वी हैव द दीवान आम आफ्टर झरोखा दर्शन। फोर्थ पॉइंट इज दीवान आम। दीवान आम मीन्स आफ्टर झरोखा दर्शन किंग मेड हिज अपीयरेंस इन दीवान आम फॉर 2 आवर्स। दीवान ख़ास और दीवान आम में बादशाह 2 घंटों के लिए 2 घंटे रहा करता था। Here he for routine work. Routine work of administration was done. On one had to seek the permission to enter the दीवान आम। इसमें हर एक को परमिशन नहीं था, लेकिन उसके लिए परमिशन की ज़रूरत थी। जो ही परमिशन लेता था वही दीवान आम में दाखिल हो सकता था। दीवान आम में बख्शी और देवान they read reports received from the officials and the king issued orders where necessary. दीवान आम में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी ऑर्डर्स इमीडिएटली ज़रूरत थी बादशाह की, वो ऑर्डर्स दिए जाते थे और वहाँ पर दीवान और बख्शी अपनी रिपोर्ट्स और कारकर्दगी बादशाह के सामने पेश की जाती थी फॉर द कंप्लेंट्स एंड फॉर द नेसेसरी एक्शंस। All the mansabdars, provincial soldiers and military campaigns were taken here. A detailed report and information about the various departments to the king was placed here. इन्हें हर एक डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के हवाले से यहाँ पर बादशाह को आगाही की जाती थी। Then we have Dewan Khas, the 5th point. Dewan Khas, here the king with high senior special and special officers or officials of the state discussed the issues, important issues or the policies. दीवान ख़ास में अपने जो कैबिनेट के जो लोग होते थे, सीनियर ऑफिसर्स जो थे, स्पेशल ऑफिसर्स थे, जो हाई ऑफिशियल्स जो थे, उनके साथ स्टेट पॉलिसीज़ डिस्कस की जाती थी और इसके मुतल्लिक ऑर्डर्स इशू किए जाते थे। देयर वाज ए प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस for entertainment of the emperor and also arranged for the दरबार। यहाँ पर दरबारियों के लिए और बादशाह के लिए यहाँ म्यूज़िक और डांस के इंतज़ामात हुआ करते थे। Then we have gifts and the titles. A grand title were adopted by the Mughal emperor at the time of coronation or after the victory over an enemy. The granting of titles to men and merit was important aspect of the Mughal polity. Titles could be earned or paid for. A courtier never approached to the emperor empty hands. In a diplomatic relations, gifts with regards as the sign of honor and respect. यानी हर एक कोटियर जो था उसके लिए ये ज़रूरी लाजमन था कि वो बादशाह के सामने कभी कभार खाली हाथ नहीं जाता था, तो लिहाजा उनके लिए गिफ्ट्स और जो ग्रेटिंग्स जो थी उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से वो बादशाह के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स और तोहफ़े और तोहफ़े लिए जाते थे। दैट वाज द रूटीन मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि टाइटल्स भी जो कारकर्दगी के हवाले से विक्ट्रीज़ के मौके पर, एनिवर्सरीज़ के मौके पर ऑफिशल्स को टाइटल से नवाजा जाता था, गिफ्ट से नवाजा जाता था। प्रमोशंस और मेरिट्स के हवाले से भी बादशाह उस वक़्त अपने ऑफिशल्स के साथ डीलिंग करता था। दैट वाज इनफ फॉर टुडे।